नमस्कार। तो आज कुछ शुरू करते हैं, ठीक है। सो हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। अर्थशास्त्र वाज रिटन बाय, यस, गेस किया होगा, तो लेट्स सी वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। यस, इट इज कौटिल्य। So here is your next question. Who is popularly known as the Nightingale of India? So option is Vijay Lakshmi Pandit, Lata Mangeshkar, Sarojini Naidu, Mother Teresa. Yes, क्या बोला आपने? Sarojini Naidu. Let's see. Yes, you are right. So next question. The foreign traveler who visited India during Vijayanagar period was Niccolo di Conti, Yuan Shang, Fabian Megasthenes. Can you guess? So let's see the right option. Yes, Niccolo di Conti. He belongs to Italy. So let's see the next question. In which year was English recommended as the medium of instruction for higher education in India by Lord Macaulay? इंग्लिश कंपल्सरी रिकमेंड कब किया था मैकले ने? मैकले एजुकेशन आपने ऑब्वियसली सुना होगा। सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन। यस, इट इज 1835. India liberated Goa from the Portuguese in Goa was the colony of Portuguese. India was a colony of British initially before 1947. तो गोवा कब लिबरेट किया इंडिया ने? कुछ गेस कर पाए? So let's see the right option. Yes, it is 1961. In which year was Akbar born? Famous ruler. Yes, 1542, 1533, 1545, 1544. Can you guess? Yes, it is 1542. In which dynasty did King Ashoka belongs? Famous ruler. King कौन सा डायनेस्टी से थे? So let's see the right option. So he belongs to Maurya dynasty. Which dynasty did Razia Sultana belongs? Obviously सुना है आपने, फर्स्ट लेडी कौन सा डायनेस्टी से थी? Yes, it is Mamluk dynasty. Which is the national flower of India? Obviously ये तो आपको आता है ना? So right option is lotus. The judges of the Supreme Court of India hold office till they attain the age of, कितना एज में उन लोग रिटायर हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जज? So year is given here. Can you guess? Yes, let's see. It is 65 years. Which one is not a fundamental right in the Constitution of India? Yes, दोस्तों, let's see the right option. Yes, right to property. Initially it was fundamental rights, later on इसको हटाया गया, ठीक है। So which religious segment in the population of India enjoys the highest literacy rate? Hindus, Jains, Parsis and Buddhists. Out of this literacy rate किसका ज़्यादा है? कुछ आपने गेस कर पाए? Yes, it is Jains. Where is the National Gallery of Modern Art located?
ऑब्वियसली सुना है. सो लेट्स सी द राइट ऑप्शन. इट इज न्यू दिल्ली. द हाईएस्ट इंडियन डेकोरेशंस फॉर शोइंग वेलोर एंड गैलेंट्री इन द वॉर इज, क्या हो सकता है, कौन सा हाईएस्ट अवार्ड है? यस, यू आर राइट, दैट इज परमवीर चक्र. In which state the Nagarjun Sagar Dam is located? कहाँ पे है ये? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला. Yes, it is Andhra Pradesh. Where is Satish Dhawan Space Center located? Yes, right option is Sriharikota. Next question. India's national game is cricket, football, kabaddi, hockey. क्या लगता है दोस्तों? Yes, it is hockey. लोग क्रिकेट पॉपुलर है, लेकिन हॉकी इज आवर नेशनल गेम. Who is the ex officio chairman of नीति आयोग? Earlier it was known as प्लानिंग कमीशन, अभी इसको हम नीति आयोग से जानते हैं. तो चेयरमैन कौन है? द प्रेसिडेंट, द फाइनेंस मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द स्पीकर ऑफ लोकसभा. यस फ्रेंड, यू आर राइट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 was affected by, किसका दिन में हुआ था बंगाल पार्टीशन? यस, इट इज लॉर्ड कार्जन. हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? यस, इट इज A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टोवियम ह्यूम. The Mughal ruler who spent 15 years in exile was, कुछ गेस कर पाए? Yes, it is Humayun. National Consumers Rights Day is observed on, डेली हम लोग सामान परचेज करते ही है ना, तो अगर चीटिंग हो गया तो कहीं ना कहीं तो हमको जाना पड़ेगा कंप्लेन लेके, तो कहाँ जाएंगे? दैट इज कंज्यूमर. तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग वन कंज्यूमर कोर्ट्स टू अवेयर दैट वन वी ऑब्जर्व वन डे. तो कब है? यस, इट इज December 24. Which Indian lady is the first to reach the rank of Lieutenant General in the Indian Army? Can you guess, friend? Yes, it is Punita Arora. Indian Railway and Postal Service were started during the reign of, किसका दिन में शुरू हुआ था इंडियन रेलवे एंड पोस्टल सर्विस, which is considered very crucial to get independence? Yes, friend, it is Lord Dalhousie. In which year was the Reserve Bank of India established? Yes, friend. Can you guess? Yes, you are right. It is 1935. तो थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में.